Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. And in this video friends, we're going to discuss about a new topic and a new subject also we can say. And the subject name is the principles of marketing. In a short form, we can say it the POMKT. So in this video, we are going to deeply discuss about the marketing and its principles. So in this video friends, firstly, we are going to cover the meaning and definition of marketing, and also we're going to learn about the nature of marketing, which is also called features of marketing. And this is a very important and the basic question friends, which help you to understand the marketing and its principles and its natures and features. So now let's start this topic here friends. So as you can see on my screen, first we're going to deal with the meaning and definition of the marketing. So what it is actually mean? The activity or business of promoting and selling of goods and services, including marketing, research and advertising. So basically marketing का मतलब होता है, it is a one type of activity or the business. It can be also called as a business or the activity जहाँ पर we sell the goods and items and the services, जहाँ पर हम किसी भी गुड्स आर्टिकल आइटम और द कमोडिटी को बेचते हैं, एंड सर्विसेज विच इज़ कॉल्ड एज एन एक्ट विच इज़ ऑफर्ड बाय फ्रॉम वन पार्टी टू द अनदर पार्टी, जिसे हम कहते हैं सर्विसेज. तो गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती हैं. एंड ऑल्सो जो भी हम मार्केटिंग को रिसर्च करते हैं, मार्केटिंग के बारे में डीपली स्टडी करते हैं और advertisement and all. So these are the things which we call and which comes under the marketing. So now let's here move further to the definition friends. According to Chartered Institute of Marketing UK defines marketing is the management process of identify, anticipates and satisfy the customer requirements profitability. इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि मार्केटिंग का मतलब होता है इट इज़ द मैनेजमेंट प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वी गोना मैनेज, वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड एंटिसिपेट. हमको ढूंढना है कि कस्टमर क्या चाहता है, एंड एंटिसिपेट करना है, अंदाज़ा लगाना है, प्रेडिक्ट करना है व्हाट योर कस्टमर इज़ एक्चुअली वांट. एंड वी नीड टू सेटिस्फाइड आवर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबिलिटी. एंड हमको जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा ऑडियंस, हमारा कस्टमर क्या चाहता है मार्केट से, एंड उसी तरीके से प्रोडक्ट को बनाना और उनको डिलीवर करना ताकि हम हमारे कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. एंड ऑल्सो हियर वी वन वर्ड इज़ यूज हियर, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इट इज़ नॉट मीन दैट यू शुड बी इन अ लॉस वाइल प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज टू योर कस्टमर. यू शुड ऑल्सो ट्राई टू मेक प्रॉफिट, and you should also balance between the profitability and the satisfaction of your customers. Okay, so now let's move further friends. Nature and features of marketing. So first we have many pointers here which we deeply going to discuss. So let's start with the meaning and the features and the nature of the marketing. So अगर एग्जाम में आपको फ्रेंड्स बोलता है नेचर ऑफ मार्केटिंग लिखें, so you have to write this question. And if the examiner is asking about the feature of the marketing, so also at that time also you have to write the same answer. Okay, so now let's learn together friends. First point is the systematic process. So here we can say that marketing is a systematic process. Exactly दोस्तों, marketing क्या है? एक systematic process है जहाँ पर सबसे पहला काम होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है. अगर कस्टमर कोई चीज़ चाहता है, उसी के तरीके से प्रोडक्ट को बनाना और उसी तरीके से प्रोडक्ट को बेचना, इसे हम कहते हैं ये मार्केटिंग. So as you can see on the screen, marketing is the systematic process of identifying customer needs and wants and satisfying them by designing and delivering the right प्रोडक्ट. और हम हमारे कस्टमर्स की एक बार नीड्स एंड वांट्स को जब हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, सो हमें उसी तरीके से प्रोडक्ट बनाना है जो वो चाहते हैं ताकि हम उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकें. सो द मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट, fixing the right price, effective promotion with the help of the proper advertisements and distribution at the right place,
राइट प्लेस मीन्स व्हाट, यू हैव टू इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट। जहाँ भी आपके प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपके प्रोडक्ट का डिलीवर करना इट्स वेरी मस्ट, इट्स नथिंग बट द प्रोडक्ट्स का अवेलेबिलिटी होना इट्स वेरी मस्ट। एंड मार्केटिंग प्रोसेस इज अ कॉन्टिन्यूस इन नेचर। सो ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पर हमको कहीं भी स्टॉप नहीं होना है, बट इट शुड बी ऑन अ ऑन गोइंग मोड। ओके, so now let's move further friends. I hope you understand for point number 1 properly. Now let's move further. So here we have a second point friends, which is ideas, goods and services. So now basically at the time of doing marketing, we are not supposed to do focus on the goods, we are supposed to do focus on the services also. And in the market we share some ideas and thoughts also. So like for example, goods means what, the this may be any items and the commodity in which we have a physical existence are called goods. Okay, so goods like FMCG products होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, है ना, हम उनको यूज़ कर सकते हैं इन अवर पर्सनल लाइफ। जैसे कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ, आई होप आपके पास एक बुक होगा, एक पेन होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, हेडफोन होगा, जो आप सुनकर स्टडी कर रहे होंगे। सो बेसिकली ये 4 आइटम्स जो मैंने गिनाए, दीज आर द गुड्स ओनली। ओके, एंड नाउ intangible services. So intangible services क्या होती है, basically services are intangible in nature. It means we cannot touch the services like goods, but we can feel the services, we can take experience from it. Okay, so services like means what, see, as a teacher I'm just providing my services to you people. Here I'm not selling any goods and items friends, but here I'm just sharing my views, my thoughts, my opinions, my experience with you people. It's kind of a services. You're going for the salon for the dress up of your hairs, so again the hairdresser will provide services to you. He or she is not going to give something to you. Okay, it's not like a goods wala item, it's a services wala thing. Okay, then ideas. So basically marketers adopt to share some ideas and thoughts also. For example, we are supposed to save environment. So environment save campaigns जो बनाए जाते हैं, यहाँ पर ना हम goods बेच रहे हैं, ना हम services बेच रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर क्या करें, एक idea, एक thought share कर रहे हैं कि we should save our environment. एंड इसके अलावा समझिए आप एंटी ड्रग्स रैली का कैंपेन्स निकालते हैं। सो ये जो एंटी ड्रग्स रैली का कैंपेन निकल रहा है, सो इस कैंपेन के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर सर्विस ना ही गुड्स बेची जा रही है, बल्कि एक आइडिया शेयर किया जा रहा है कि वी शुड प्रोहिबिट ऑफ ऑल दिस आइटम्स जो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, दैट इज द टारगेट मार्केट। सी फर्स्ट विल हैव टू से दैट पहला फीचर क्या था कि मार्केट एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सेकेंड हमने देखा कि यहाँ पर आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज शेयर की जाती है। एंड थर्ड आपने देखा अभी यहाँ पर टारगेट मार्केट। सो मार्केटर्स नीड्स टू डिज़ाइन गुड्स एंड सर्विसेज टू अ पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट्स और द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं मार्केटिंग करती हूँ, सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मैं टॉयज़ बनाती हूँ, सो बेसिकली अगर मैं टॉयज़ बना रही हूँ, सो बेसिकली मेरा टारगेट ऑडियंस विल बी द किड्स एंड चिल्ड्रंस, राइट। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वही किड्स से खेलेंगे, राइट, वही जो है टॉयज से खेलेंगे। सो इन केस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ माई प्रोडक्ट आई नीड टू फिक्स एंड सेट माई टारगेट ऑडियंस टू। ओके, सो मार्केटिंग का ये नेचर भी है कि वो अपने टारगेट ऑडियंस को सेट करते हैं, चूज़ करते हैं, पिक करते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ वन फ्रेंड्स, इट्स ऑल परवेसिव, मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मार्केटिंग इज ऑल परवेसिव। चाहे आपका छोटा सा बिजनेस हो या बहुत बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बट हर जगह पे आपको जो है मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट लगता ही लगता है। The process of marketing is applicable not only to the small business organization but also for the non business organizations also. मतलब अगर कोई आपका commercials है, business organization है, then too you require the marketing, and अगर आपका non business organization है तो भी ये रिक्वायर्ड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको समझ में आता है बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कमर्शियल्स है, या फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, सो समझ में आता है कि भाई ये बिजनेस का एक पार्ट है, तो यहाँ पर तो मार्केटिंग लगेगा ही। लेकिन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि काफ़ी सारी फ्रेंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है, वहाँ पर भी आपको जो है मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही आप देख लें कि ऑफर राइट कोर्स, मतलब दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट, कोर्स प्रोवाइड करना ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए हो जाएगा प्रोडक्ट,
प्राइस फीस की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। जो कोर्सेज है, अगर जो भी कोर्सेज अपडेट कर रहे हो वो, एंड राइट प्लेस मतलब के कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस, ओके। Now come to the very important point, that is the customer satisfaction. Exactly. Whatever you people are doing here, very important thing in concept is just to satisfy your customer. Your customer should be satisfied with your product and services first. And now समझिए, basically जो customer satisfaction है, it is the correlationship between the product's performance and the customer's expectation. Product performance, आपका product क्या service दे रहा है, उसका performance कैसा है, उसमें कितना utility है, कितना customer से happy है, and customer का expectation मतलब जो customer सोचता है किसी भी product को लेकर, ठीक है। सो समझिए कि अगर मैं एक आई वॉच लेती हूँ या स्मार्ट वॉच लेती हूँ, सो बेसिकली मैं क्या सोचूंगी कि इसका जो गारंटी मुझे दिया वो 1 साल का दिया गया, बोला था कि 1 साल तक तो वॉच एकदम अच्छे से चलेगी। तो समझिए जब मैंने वो वॉच ख़रीदा और वो वॉच 1 साल, मतलब जब भी कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मैच करता है, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, दोनों चीज़ एक दूसरे से मैच करता है, तो हम कहते हैं कि कस्टमर इज़ सेटिस्फाइड। मतलब 1 साल बोला था वॉच चलेगा और 1 साल तक वॉच चला भी, मतलब प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस वॉज इक्वल्स टू माई कस्टमर सेटिस्फैक्शन और द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो हम कहेंगे कि हियर द कस्टमर इज सेटिस्फाइड। अच्छा, अगर दूसरी कंडीशन इज, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैच विद द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, द कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, मतलब दोनों मैच हो रहा है, सो कस्टमर सेटिस्फाइड। व्हेन द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज बिलो द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, द कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड। मतलब कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बोला था 1 साल चलेगा, लेकिन घड़ी 5वें महीने में ही ख़राब हो गई, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस वॉज बिलो टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो कस्टमर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिससेटिस्फाई हो जाएगा। देन वी हैव थर्ड, व्हेन द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एक्सीड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन, द कस्टमर आर डिलाइड। प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस जो है 1 साल के लिए बोला था कि वॉच अच्छे से चलेगी और वॉच चली 2 साल, सो मतलब परफॉर्मेंस वॉज बिगर देन द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सो ऐसे कस्टमर को हम कहते हैं डिलाइड। एंड देन वी हैव व्हेन द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस वेरी मच मोर देन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन विल एस्टोनिश्ड। मतलब प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, मतलब बोला था 1 साल घड़ी चलेगी, लेकिन वो घड़ी चली 6 साल, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक का घड़ी चली। सो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कस्टमर इज़ एस्टोनिश्ड। तो ये 4 चीज़ें आपने सीखी, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिलाइड एंड एस्टोनिश्ड। ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, customer relationship. See, as a good marketer, we need to always try to make a good relationship with our customers, because it helps to increase the firm's performance and also it helps to increase the sales over the market. Okay, now move next for expansion of business. Jitna effectively you do the marketing, utna hi your business will expand. जितना अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, उतना ही आपका बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। इफ़ योर कस्टमर विल हैप्पी विथ यू, उतना का उतना ग्रोथ आपके बिजनेस में दिखाई देगा और यू कैन ईजिली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हियर फ्रेंड्स। सी, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हियर? सो फर्स्ट इज profit will increase, your market share will increase, your corporate image will build, your brand image of your product will build, and brand loyalty among the customer will also increase. Okay, now the second last point here, which is marketing environment. Marketing should activate actually environment analysis and marketing mix adopted by the competitors accordingly. He has to design the products that offer differentiated advantages to the customer. Market environment refers to, you have to analyze the market environment also, and then आपको उस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर को अलग अलग तरीके से भी एडवांटेजेस दे सके। Then we have last point friends, integrated approach. Yes, the marketing is an integrated approach. मतलब it is, marketing needs to integrate with the other function areas, मतलब we need to always make a coordination with the other functional areas. For example, we have many other functions at the single business like HR managers, HR functions होते हैं, financial
functions departments अलग होते हैं, so we need to always keep a good relationship between the other departments of the same business organization. Okay, so definitely it will increase the social interest also. ठीक है, then we have a next point, यहाँ पर मैंने बोल्ड नहीं किया है फ्रेंड्स, दैट इज सोसाइटल इंटरेस्ट. सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में भी आपको सोचना है, यानी कि इट मीन्स इफ यू हैव अ बिजनेस सो डेफिनेटली यू विल हैव टू गो टू अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट के अलावा यू नीड टू ऑलवेज ट्राई टू satisfy your customer and provide welfare to the society also. So here we have a formula: profit plus customer satisfaction plus public interest. So here we have completed this topic, friend. If anybody have any doubt and difficulty, you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.